Now, this is topic number 7.1.1 and we will discuss here solid liquid equilibrium. Solid liquid equilibrium. इसके पहले मैंने आपको क्या बोला था? On the basis of phase, three different type of condition will be there. तो उसमें से first of all solid liquid equilibrium will come. Here we will discuss solid liquid equilibrium. Clear? तो सॉलिड लिक्विड में क्या करना है, जैसे मैंने 1 किलोग्राम आइस लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग ये 1 किलोग्राम ऑफ आइस, उसको आप गर्म करो, तो जैसे जैसे नॉर्मली वी आर हीटिंग इट, तो व्हाट विल हैपन, हियर डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल विल इंक्रीजेस एंड फाइनली हियर मींस व्हाटएवर सॉलिड विल बी देयर इट इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट. क्लियर? तो यहाँ पे देखो आइस एंड वाटर kept in perfectly insulated thermos flask. So what is thermos flask? So where we can say that no exchange of heat between its contents and its surrounding at 273 Kelvin and the atmospheric pressure are in equilibrium state. यहाँ पे जो pressure है ना, pressure, so this is again in equilibrium state and the system shows interesting characteristics features. Clear? Suppose if you are interested to explain solid liquid equilibrium, so whatever ice we are selecting, it should be again means put inside thermos flask, and this thermos flask is again we can say that insulated, and here insulation will be again in such a way that here means exchange of heat will be again we can say that not take place from inside to outside. Clear? Now we observe that mass of ice and water do not change. We observe that mass of ice and water do not change with time and the temperature remain constant. Here we can say that temperature remain constant. However, the equilibrium is not static. However, in this situation, equilibrium will be again we can say that not static. Static मतलब कैसा होता है? Which is related with respect to state of the material. Clear हुआ कि नहीं? However, the equilibrium is not static. Clear? Now, the intense activity can be noticed at the boundary between ice and water. Clear हुआ कि नहीं? The intense activity can be noticed at the boundary between ice and water is there. Clear? Now, molecules from the liquid water collide against ice and adhere to it, and some molecule of ice escape into liquid phase. There is no change. There is we can say no change of mass of ice as well as water. As the rate of transfer of molecule from ice into water and of reverse transfer from water into ice are equal at atmospheric pressure and at 273 Kelvin. Clear? जैसे चलो यहाँ पे मैंने क्या लिया, तो दिस इज H2O solid, आप इसको हीट करो, here H2O liquid will be there. Clear? So whenever we are heating this H2O, so whatever H2O solid, it means this is normally known as ice and this one is nothing but it is normally known as water. Clear हुआ कि नहीं? So whenever we are supplying here means heat, then that type of heat will be perfectly absorbed by this ice and then after we can say that conversion from solid to liquid state will start. Clear? चलो now ये तो आपका ये हो गया. अब यहाँ पे क्या आएगा, it is obvious that ice and water are in equilibrium. यहाँ पे क्या है, ice and water will be again in equilibrium at particular temperature and pressure. Here we can say that equilibrium will be attained. But here temperature and pressure should be again we can say that fixed. And to fix here temperature and pressure, we are taking insulated container, that is we can say that thermos flask. Clear? So for any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium is known as normal melting point. So this is definition of normal melting point or normal freezing point of the substance. Clear?
तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट? तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट का मतलब सी, तो हियर वी कैन से दैट इट इज ऑब्वियस दैट ice and water are in equilibrium only at particular temperature and pressure. For any pure substance at atmospheric pressure, the temperature at which the solid and liquid phases are at equilibrium is known as normal melting point or normal freezing point of the substance. मतलब जो भी substance लेते हो उसके बारे में बातचीत चल रही है, ठीक है। चलो अब क्या दिया हुआ है, the system यहाँ पे सी, so whenever we can say that conversion of solid to liquid and liquid to solid will take place, here melting is one of the important process. Here we can say that melting is nothing but it is one of the, we can say that, important process. So whenever melting process will start, here equilibrium will be attained. So this equilibrium may be static or as well as we can say that dynamic. So now the system is here in dynamic equilibrium. And we can infer the following. So both the opposing process occur simultaneously. यहाँ पे क्या है, both the opposing process occur simultaneously and both the process occur at the same rate so that amount of ice and water remain constant. So see, so during conversion from solid to liquid and liquid to solid, here means two important phenomenon will be there. Which one? Number one, so both the opposing process occur simultaneously, clear? And second one, both the process occur at same rate so that amount of ice and water remain constant. So this is complete information whenever we can say that here conversion of solid to liquid will take place. Here we can say that conversion of solid and then after we can say that liquid will again we can say that take place here. समझ में आया? चलो, now second one we will discuss here liquid and vapor. Now we will discuss here means second equilibrium. पहला था solid to liquid, now liquid to vapor. तो यहाँ क्या करना है? See, now this equilibrium can be better understood. We consider the example of transparent box carrying a U tube with mercury, है ना? इधर इसका मतलब क्या है? तो this equilibrium can be better understood if we consider the example of transparent box carrying U tube with mercury. तो देखो यहाँ पे क्या करना है, ऐसा, इसका मतलब ये फिगर आ गया. तो this is we can say that figure, ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है एंड हियर वी कैन से दैट वी आर पुटिंग, इसके अंदर नाउ वी आर पुटिंग हियर मींस मैनोमीटर. नाउ हियर वी आर पुटिंग वी कैन से दैट मैनोमीटर. ये एक इंस्ट्रूमेंट है. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मींस कैलकुलेट प्रेशर. मैनोमीटर मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट हियर मींस प्रेशर वैल्यू. क्लियर? तो दिस इज वी कैन से दैट प्रेशर वैल्यू. अब है यहाँ पे मैनोमीटर और बैरोमीटर, टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. वन वी कैन से दैट मैनोमीटर एंड सेकंड वन इज बैरोमीटर. क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैनोमीटर मतलब, तो विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर वी आर कैलकुलेटिंग, with the help of manometer we are calculating small change in pressure. Here with the help of manometer we are calculating small change in pressure, while with the help of barometer we are calculating large change of pressure. ठीक है? तो पहला क्या दिया? तो this equilibrium can be better understood if we consider example of transparent box. देखो ये क्या है? ट्रांसपेरेंट बॉक्स है carrying U tube, ये रहा U tube with mercury. तो जो ग्रीन वाला है, तो this one is again we can say that mercury. Clear हुआ? Now second one, तो as a drying agent, see, as a drying agent here we are taking anhydrous calcium chloride is placed for few hours, यहाँ पे रखना है in the box, and after removing the drying agent by tilting the box on one side, a watch glass or petri dish containing water is quickly placed inside the box. पहले तो आप इसको क्या कर दो, एकदम ड्राई कर दो. और ड्राई करने के बाद now we are taking, here we can say that water molecule,
अब इसके अंदर क्या करने का, वाटर मॉलिक्यूल ले लो, और वाटर मॉलिक्यूल लेने के बाद जैसे ही आप बॉक्स को थोड़ा सा तिरछा करते हो तो नॉर्मली व्हाट विल हैपन हियर, whatever water molecule will be added here, it will be tilting out, and due to removal of this water molecule, here what will happen, dissolved gases will comes out inside this mercury level, and here level of mercury will be changed. क्लियर हुआ कि नहीं? आपको क्या करने का, वो चेंज लेवल को एक बार देख लो कितना चेंज हुआ। ऐसे एक बार वाटर लिया है, उसके बाद मिथेनॉल लिया है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल लिया है यूजिंग हियर। क्लियर? यहाँ क्या बोला, सी it will be observed that the mercury level in right limb of the manometer, ये manometer slowly increases and finally attain a constant value. So that is the pressure inside the box increases and reaches a constant value. Clear? Also the volume of water इन वाट्स ग्लास डिक्रीजेस, यदि इसके अंदर वाटर था तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? इनिशियली देयर वाज नो वाटर वेपर इनसाइड द बॉक्स, पहले क्या था, नो वाटर वेपर आर देयर, बट एज वाटर इवोपरेटेड द प्रेशर इन द बॉक्स विल इंक्रीजेस। फिर आपने यहाँ पे जैसे ही वाटर रखा तो क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीजेस, एंड ड्यू टू द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द गैसियस फेज inside the box, now rate of evaporation is constant, and यहाँ पे आपने water लिया, here amount of water will be fixed, here we can say that amount of water will be fixed। तो यदि amount of water fixed है तो whatever we can say that pressure is generated inside this mercury level, it will be also we can say that constant here। समझ में आया कि नहीं? आपको मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले क्या करना है, ये आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉक्स लेना है, इधर पे ड्राइंग एजेंट लेने का, एंड विद द हेल्प ऑफ द ड्राइंग एजेंट वी आर कंप्लीटली मेंटेनिंग हियर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। क्लियर? अब उसके बाद नाउ दिस कैल्शियम क्लोराइड विल बी रिमूव्ड, यू कैन यूटिलाइज अनदर टाइप ऑफ ड्राइंग एजेंट आल्सो। फिर यहाँ पे वाटर लेना है, फिर ये पेट्री डिश को थोड़ा सा हिलाने का, तो ड्यू टू दैट whatever gaseous molecules are present inside this water, it will change as here mercury level right hand side in U tube, and then after see on the basis of disturbance in mercury level, we can find out vapor pressure which will be generated here, which will be again we can say that generated here। Clear? तभी हम लोग ने वाटर लिया है, ऐसे आप क्या कर सकते हो, तो we can utilize here different type of sample। वो सैंपल क्या हो सकता है, it may be either methyl alcohol, it may be either we can say that acetone, or we can say that here means ether। तो जैसे देखो सबसे पहले हम लोग ने क्या लिया, here as a sample water लेने का, then after यहीं पे क्या लेने का, methyl alcohol, इधर ही क्या ले लिया है, CH3 that is we can say that acetone। Clear? So after taking different type of sample, here we can say different type of sample, now whatever thing or whatever activity will be done for water molecule, same thing will be done for methanol as well as acetone। और उसके बाद आपको कंपेयर करने का, here disturbance of mercury level inside this U tube। क्लियर हुआ? उसके बाद आपको एनालिसिस करना है in which condition here we can say that too much amount of disturbance in mercury level will be done here। Clear? In which condition too much amount of we can say that here disturbance in mercury level will be done। देखो मैं आपको फिर से बता दूं, ग्लास का बॉक्स लेना है, पेट्री डिश लेना है, पहले इसको एनहाइड्रस मटेरियल कैल्शियम क्लोराइड लेने का, पूरे ग्लास के बॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर देते हैं, एंड देन आफ्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग दिस वाटर मॉलिक्यूल लिया, इनसाइड दिस वाटर डिसॉल्व गैसेस आर देयर। क्लियर? फिर इसको थोड़ा सा बॉक्स को हिलाना है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल में से व्हाटएवर गैसियस मॉलिक्यूल विल बी देयर, इट विल बी इवोपरेटेड, एंड दिस गैसियस मॉलिक्यूल विल डिस्टर्ब हियर लेवल ऑफ मर्क्यूरी इनसाइड दिस U tube, है ना। फिर एक बार आपको वाटर लेना है, दूसरी कंडीशन में सेम पैटर्न इसमें वी आर टेकिंग हियर दिस मिथेनॉल, फिर से वही एक्टिविटी करना है,
फिर देखने का व्हाट इज वी कैन से चेंज ऑफ मर्क्यूरी लेवल, और तीसरी कंडीशन में वी आर टेकिंग हियर मींस एसीटोन. क्लियर? इन दिस वे थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल विल बी टेकन इन पेट्री डिश. क्लियर हुआ? एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट चेंज इन मर्क्यूरी लेवल, and on the basis of change in mercury level in U tube we can find out here amount of vapor pressure. ठीक है? तो जिसका vapor pressure will be more, उसका disturbance will be more here. समझ में आया कि नहीं? तो this is complete information from liquid to vapor equilibrium. ठीक है? Now next one is here solid vapor equilibrium. Actually see, with respect to phase, three different type of equilibrium will be there. One we can say that solid to liquid, second one is again is liquid to vapor, and third one we can say that the third one is nothing but it is we can say that solid to vapor equilibrium. तो यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है? See, so let us now consider the system where solid sublime to vapor phase, मतलब sublimation will be there. If we place solid iodine in closed vessel, after some time the vessel gets filled up with violet vapor and intensity of color increases with time. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Here we will discuss sublimation. तो here we will discuss sublimation. Clear? तो after certain time the intensity of color become constant, and at this stage equilibrium is attained. Hence solid iodine sublime to give iodine vapor, and iodine vapor condense to give solid iodine. The equilibrium can be represented like this, solid to vapor. इसी को sublimation बोलते हैं. Other example of sublimations are camphor solid है, camphor vapor, और ऐसी NH4Cl solid है और ये NH4Cl vapor. तो what is sublimation? So whenever your material is converted into solid to liquid and liquid to gas, so this one is nothing but it is normally known as sublimation. So here we can say that equilibrium with respect to phase is completed. अब आता है next one. So now we will discuss 7.1.4, the equilibrium involving dissolution of solid or gases in liquid, dissolution of solid और गैसेज इन लिक्विड. तो यहाँ पे पहला आता है सॉलिड टू लिक्विड और दूसरा आता है गैस इन लिक्विड. तो whenever we are dissolving sugar, है ना, whenever we are dissolving sugar inside water, तो आपको क्या करना है? Here we are taking mixture of 500 gram radioactive sugar and 500 gram non-radioactive sugar. So whenever we are taking mixture of 500 gram radioactive and 500 gram non-radioactive sugar, so normally what will happen? Here dissolution will start. Clear? As we can say that, see, dissolution of sugar particle will start. Then first of all, whatever sugar is non-radioactive in nature, its dissolution will start. जैसे 500 ग्राम 500 ग्राम non-radioactive sugar dissolve हो जाता है, then after we can say that dissolution of radioactive sugar will start. So yes, we can say that dissolution of radioactive sugar will start here. So radiations are emitted out from this container. Radiations are emitted out from, we can say that this container. तो जैसे ही radiation emit होना चालू हो जाता है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा? Here equilibrium condition will be attained. Here we can say that इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी अटेन्ड. यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है? हियर वी कैन डिस्कस कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड एज वेल एज वी कैन से डायनेमिक इक्विलिब्रियम. तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. क्लियर हुआ कि नहीं? बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हियर वी हैव टू टेक मिक्सचर ऑफ रेडियोएक्टिव एज वेल एज नॉन रेडियोएक्टिव शुगर. क्लियर? ऐसे चलो. दूसरा आता है गैसेज इन लिक्विड. So whenever we are dissolving or whenever we are trying to dissolve any gas inside this water, तो CO2 गैस है और ये CO2 solution है. तो पहले क्या करने का? First of all, see, we are fixing here amount of solvent, मतलब water को fix कर दो, and then after dissolution of CO2 gas will start. As time will increase it,
here we can say that as time will increases, तो dissolution of CO2 gas will again means increase. चलो अभी 1 लीटर वाटर है और उसमें ऐसा मान के चलो कि 500 ml मैक्सिमम CO2 विल बी सोल्यूबल हियर, तो 500 में से क्या होगा 250 सोल्यूबल हो गया, 250 बाकी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं गैसेस इज अगेन वी कैन से दैट इन इक्विलिब्रियम, गैसेस इज अगेन वी कैन से दैट हियर मींस इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या होगा गैसेस इन इक्विलिब्रियम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हियर मींस ऑल फिनोमेनन which is related with respect to, all phenomenon related with respect to, here we can say that solid as well as gas in liquid। चलो लिक्विड टू वेपर का एग्जांपल है, किसको लेने का H2O लिक्विड एंड H2O गैस। तो हियर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज कांस्टेंट एट गिवन टेंपरेचर, हियर वी कैन से दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इज अगेन इज कांस्टेंट एट गिवन टेंपरेचर। दूसरा आता है सॉलिड टू लिक्विड, तो यहाँ पे सॉलिड और ये लिक्विड, here melting point is fixed at constant pressure, here melting point is fixed at constant pressure। similarly solute solid है और ये solution, यहाँ पे sugar लेना है, ये sugar solution, तो concentration of solute in solution is constant at given temperature, concentration of solute in solution is constant at given temperature। फिर से आपको गैस और ये aqueous और यहाँ पे CO2 गैस और ये aqueous, यहाँ देखो aqueous और गैस इज कांस्टेंट एट गिवन टेंपरेचर, सिमिलरली aqueous एंड गैस इज कांस्टेंट एट गिवन टेंपरेचर। तो ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ अप करके बताया, मतलब हियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज देयर, वन वी कैन से दैट फेज एंड सेकंड वन वी कैन से दैट डिसोल्यूशन। एक आपका फेज वाला है और सेकंड वाला क्या है डिसोल्यूशन। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना।